Very good morning, students of class 6 mathematics. Welcome to our class. Right, today we will do the part 3 of the mathematics and our chapter name is exercise 10.2. हम जैसे कि मेंसुरेशन कर रहे हैं और मेंसुरेशन में लास्ट पार्ट में हमने पेरीमीटर के बारे में सीखा था. पेरीमीटर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द शेप. Now in this part we will see the how to find the area of the different shapes. Right, so we know that today's topic is area. How to count the area of the different types of the shape which is given into the grids. Right, so for this explanation I have taken the example number 10 of your textbook. What they are saying that find the area of the shape in the figure 10.10. Friends, if you have the textbook with yourself, right, so this is the figure 10.10. I have tried to prepare like that. Right, यहाँ पर मैंने स्क्वायर ग्रिड बनाया and in this square grid you can see the dotted lines and these are the squares. Right, these grids are the square grid and in this grid there is a figure is given, that is the different types of the shape. Right, it is not the regular shape, it is somehow irregular shape which is given into the grid and we have to find the area of this field or the shape. Right, so how to find the area of this field? Because it is very difficult, because we have to count the number of square that is filled by this shape completely. Right, we have to see the area which is completely filled by this shape into the square grids. So we can see that here is only 3 grids. You can see, if you carefully see, only 3 grids. This one, that is the 1, 2 and 3. Only this 3 grid fill this square completely. But here you can see that this grid, this one and this one, right? I think I can give the name A, B and the C. A, B, C, these are the grid. This is not completely filled, it is half filled. Right? So in this way we can calculate the area, and to understand it betterly, right, we have to prepare a table. So we have the 3 columns, right? Covered area, number of that grids and the area estimated square units. Right? So what we can see that, as I have seen that 1, 2 and these 3 grid, they are completely filled. So we can write fully filled squares are 3. Right? And there are the A, B, C. These are the 3 grids which are half filled. It is not completely filled. This is half filled. So we can write half filled square grids are 3. So these are the number of grids which is completely and half filled. So we can see that completely filled grid are 3. So we have to multiply by 1, because we know that the area of this 1 square grid is 1 square unit. Right, so we have to multiply it with 1. So we will get 3 square unit area of the shape. And half filled square grids are 3, and we know that the area of this square, that is the half square unit. Right, so we have to multiply this 3 half filled grid with the half and we will get 3 upon 2. Now we can calculate the total area. What is the total area? 3 plus 3 upon 2. यानी कि हाफ फील्ड एरिया जो है और फुल फील्ड एरिया जो है उसको हम ऐड कर देंगे. सो वी विल गेट 9/2 which is equal to 4.5. That is the 4 ratio 1/2 square unit. So this is the total area as you can see in this solution. Now we will see the another question, that is the example number 11. Just please note it down and just understand this, and we will see the example number 11. Now students, we will see the example number 11, and in the example number 11 this figure is given. Right, this is the figure 10.11 and this is like the figure. I have tried to make it perfectly, but if there is any mistake, so sorry for that. Right, but you can follow the textbook. Right, textbook में आप ये figure देख सकते हैं, and you can have the irregular shape which is filled into the grid, and some squares are completely filled, some squares are half filled, some squares are more than half filled and some squares are less than half filled. Here in this diagram you can see there are the 4 types of the field. Right, 4 types of the square which is completely half, more than half and less than half filled is given. Right, so according to the figure we have to prepare this type of table. This is the covered area, number and area estimated. ये हम करेंगे. So this is the very easy method by which we can understand it clearly. Right, so what are the numbers of fully filled square grids are 11.
right? And if you calculate the area, so 11 into 1, that will give us 11, and half filled squares are 3. You can see that I have also marked that A, B, and there is another one C. These are the half filled, right? So A, B, C, these are the half filled. The number are 3, and if you multiply it with 3 into 1 upon 2, so 1 upon 2 is half, right? So it will give us that is 3 upon 2. तो ये 3 upon 2 square unit आ गया. Now we can count the number of grids which are more than half filled. So I have given the name P, Q, R, right? Then S, P, Q, R, right? And it can be S, right? T, U and V. These are the 7 fields. These are the 7 square grids which are more than half filled, and this is the 7, right? इसको हम यहाँ पर किसी भी नंबर से कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हमको ये मालूम नहीं है कि हाफ से ज्यादा ये कितना है, बट वी आर टेकिंग इट द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, बिकॉज हियर व्हाट इज द एस्टिमेशन when we do not know how much area of the grid is filled more than half, then we can estimate it as the 7, because there are the 7 grid which is more than filled, and we can take it the simple number, that is the 7. And less than half filled, यानी कि यहाँ पर कुछ ऐसी फील्ड है जिसको हम लेस देन हाफ फील्ड बोल रहे हैं, तो वो टोटल 5 है. आप फिगर को माइन्यूटली देखिए और उसमें फाइंड कीजिएगा. सो उसका जो कैलकुलेशन है हम यहाँ पर इग्नोर कर रहे हैं, उसको हम यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, राइट? सो दिस इज नॉट द परफेक्ट एरिया. Here we are counting the area which is not perfect. This is the estimated area, right? So this is the approximate area. So how we can find the total area? There is the completely filled grid are 11, and it is plus by the 3 grid which is half filled, and it is added by the 7, right? So we will get the total area of this shape into the grids, that is 9.5 square unit, right? 19.5 square unit. This is the total area of the grid, right, which is given in the question. This is the example number 11. You can also write it down, right? After that we will see the next example number 12, and after completing this example you will be able to solve the exercise 10.2 which is given in your textbook, right? So just write it down. After completing the example 11, we will see the example number 12, and example number 12 is given this diagram, right? ये diagram जो है वो example number 12 में दिया हुआ है, and we have to find the estimated area of the given figure, and you know that this is the square grid, and this is the abstract figure or the abstract shape which is given. It is the shape of the leaf, and you can see that there are many squares which is more than half filled. Some are less than half filled, and some are completely filled. But here in the diagram, if you have the textbook, so you can carefully see that here is only the one grid which is completely filled. Otherwise, more from this figure we can have that type of grid which is more than half filled, right? So here we have get the solution. Fully filled squares grid are 1, so the area of that fully filled square grid are 1, and half filled square grid are nothing here, right? So that is the 0, and more than half filled square grids are 7. So we can calculate as estimated value, that is the 7, and less than half filled which is 9, which we are ignoring here, right? Because उनका area इतना कम है कि अगर हम उसको यहाँ पर add करें, so we will not get any effect on the result. So here we do not have the perfect area because this is the square grid and it is the abstract diagram. So we can have the approximate area estimated, right? So here we can see that the total area, the completely filled square grid is only 1, and the more than half filled square grid are 7. So 1 plus 8, that is 8 square unit. This is the area of the given abstract shape into the square grid, right? So this is the example number 12, and after solving this example you you will be able to solve the exercise 10.2, right? 10.2 जो है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं. जैसे कि आप देख रहे होंगे 10.2 में I have also the textbook. तो 10.2 में आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है मैं अभी आपके सामने पढ़ रहा हूँ. फाइंड द एरियाज ऑफ द फॉलोइंग फिगर बाय काउंटिंग द स्क्वायर्स. तो जैसे कि यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 में जो ए फिगर दिया हुआ है, हियर यू कैन सी दैट देयर इज अ स्क्वायर इज गिवन, एंड यू कैन आल्सो काउंट द स्क्वायर ग्रिड्स, राइट? उसमें हम स्क्वायर ग्रिड काउंट कर सकते हैं. तो यहाँ पर हम टोटल एरिया कैसे फाइंड करेंगे? यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, राइट? Just ignore this diagram because here right now we are discussing
द एक्सरसाइज 10.2। तो 10.2 में आपको जितने भी स्क्वायर ग्रिड डायग्राम दिए हैं वो आपके सामने ही है और यहाँ पर इस टेबल को जो है हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो इस टेबल की वैल्यू को जो है मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख रहे हैं कंप्लीटली फिल्ड ग्रिड जो है वो कितनी है, 9 है, राइट, कंप्लीटली, बिकॉज यहाँ पर आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे कंप्लीटली फिल्ड ग्रिड 9 है, इसलिए हम यहाँ पर टोटल एरिया कितना लिखेंगे, 9 into 1। 9 into 1 क्यों किया है, बिकॉज 1 स्क्वायर ग्रिड हैव द 1 स्क्वायर यूनिट एरिया, राइट। तो यहाँ पर हमारा टोटल एरिया जो आ जाएगा 9 स्क्वायर यूनिट, ये आ जाएगा टोटल एरिया, राइट, 9 स्क्वायर यूनिट्स, राइट। नाउ द सेकंड figure, that is the B, in which you can have the plus sign which is also denoting the medical profession। यहाँ पर आप देख रहे हैं तो इसके अंदर भी completely filled जो है ग्रिड वो आप काउंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर किस तरीके से लिखेंगे, 1 2 3 4 5। so the fully filled square grids are there, that is total number of grid are 5, so estimated square unit area will be 5 into 1 and it will give us the 5 square unit, that is the answer। so in the figure C, right, in figure C हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, if we see the figure C, right, तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर completely square filled grid और half filled दोनों ही हमको यहाँ पर दिख रही है, राइट। तो इसमें अगर आप देखेंगे so there are only the 2 fields which are completely filled। just observe the diagram very carefully and we can feel the table। and how many grids which is half filled, 1 2 3 and 4, right। यहाँ पर आप देखेंगे 4 grid जो है that is half filled and we have to multiply 4 with half, right। so what is the total area, total area will be 2 plus 4 into half, right। so how to calculate it, right, 2 1 are 2 2 2 are 4, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन है इसलिए हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। so we will have the total area that is the 4 square units, right। यहाँ पर 4 square unit जो होगा वो हमारा टोटल एरिया होगा। so in this way you can also do the example number D। the shape is how many square grids are there, you can easily count, that is the completely filled square grids, half filled grids are not present here, so we have the square area, right, that is the 8, right। यहाँ पर हमको जो एरिया मिलने वाला है वो कितना मिल जाएगा, हमको 8 मिल जाएगा, राइट। यहाँ पर जो एरिया हमको मिलने वाला है वो कितना मिल जाएगा, 8, राइट। so 8 square unit, that is the answer, right। ये 8 square unit हमारा आंसर हो जाएगा। in the figure E how many square grids are there, you can easily count और उसको यहाँ पर आप टेबल में फिल कर सकते हैं, राइट। so that is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो एरिया कितना हो जाएगा यहाँ पर 10। just only by counting the square grids which is completely filled or the half filled we can easily get the area, right, and this is the perfect area, right। and in the figure F only the 2 grids are which is completely filled, तो उसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 2 and half filled grid कितनी होगी, 1 2 3 and 4, right। so we have the 4 grid which is half filled, 4 into half। so again we can see that here the area will be 2 plus 2 as equal to 4 square unit। यहाँ पर भी आपका जो एरिया होगा वो 4 square unit होगा। now on the figure G, right, G में अगर आप देखेंगे तो how many square fields are there which is completely filled, you can easily count it। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं only 2 grids, 1 2 3 4, sorry 4 grids are completely filled। if you are observing the diagram so you can easily see that 4 grids are completely filled and 1 2 3 and 4, right। again we can say that there is the 4 square grids which is half filled, right। so again what we can do that 4 plus 2, because 4 का अगर हम आधा कर देंगे तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 6 square unit, right। तो 6 square unit area that is of the figure G। now we will see the H। यहाँ पर अगर हम H को देखेंगे तो यहाँ पर completely filled square grid कितनी है, 1 2 3 4 5, right। so here we can write 5 and the total estimated area of the figure that is the 5। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारा जो एरिया होगा वो होगा 5 square unit, 5 square units, right? इस तरीके से ये हमारा एरिया हो जाएगा। in this way you can see the figure I 1 2 3 4 5 6 7 8 9, right। so there are the 9 grids which is completely filled, right, and the area will be 9। यहाँ पर एरिया कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। now
वी सी द फिगर जे, यहाँ पर हम जे फिगर को देखेंगे, तो जे फिगर में हम देखेंगे सो देयर इज ओनली 2 ग्रिड्स विच इज कंप्लीटली फिल्ड एंड 1 2 3 4, राइट। तो यहाँ पर फिर से हमारा एरिया कितना हो जाएगा, दैट इज टोटल इज 4, राइट। सो 4 plus 2 दैट इज, सॉरी यहाँ पर होगा 2 plus 2 दैट इज द 4 स्क्वायर मीटर। ये कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर मीटर। आई होप ये एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, बिकॉज दिस फिगर्स आर वेरी इजी फिगर्स बिकॉज दे आर द रेगुलर फिगर्स, बट इन द फिगर के, राइट, यहाँ पर के फिगर में अगर हम देखेंगे तो 4 स्क्वायर ग्रिड है जो कंप्लीटली फिल्ड है, राइट। तो यहाँ पर एरिया 4 हो गया, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे देयर इज द 2 ग्रिड विच इज हाफ फिल्ड, राइट। तो 2 ग्रिड जो होगी वो हाफ फिल्ड होगी, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, राइट। 2 इज कैंसिल्ड बाय, राइट। तो 4 plus 1 यहाँ पर एरिया कितना हो जाएगा 4 plus 1, यहाँ पर कॉलम में देखेंगे और उसको ऐड करेंगे, राइट। तो 5 स्क्वायर यूनिट ये जो है आपका एरिया हो जाएगा। नाउ वी कैन सॉल्व द फिगर एल एम एन एन। एल एम एन जो फिगर है उसके हमने यहाँ पर एग्जाम्पल अच्छे तरीके से किए हुए हैं, तो इसी को देख के आपको एग्जाम्पल नंबर 10, 11 और 12 ये फॉलो करना है और इस एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट कर लेना है। यू कैन डू इट इनटू द फेयर बुक, और सबमिशन आपके लिए बहुत जरूरी है। आपको जो भी फेयर वर्क या होमवर्क हर दिन दिया जाता है, आप एप्लीकेशन रोज चेक करते हैं तो उसके अंदर आपके लिए काफी सारा वर्क होता है, तो आप रेगुलर स्टडी कीजिए और उसका फेयर बुक बनाइए और उसको सबमिट भी कीजिए, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सबमिट करते हैं, मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो सबमिट नहीं कर रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल द स्टूडेंट, प्लीज सबमिट योर फेयर बुक, होमवर्क और ऑल दिस वर्क एंड जस्ट बी अप टू डेट, राइट। डे बाय डे जो आपका सिलेबस आगे बढ़ता जा रहा है उसी के हिसाब से आप उसको फॉलो करते रहिए, राइट। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसमें सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। हम जब डाउट सेशन जब सॉल्व करेंगे तो उसके अंदर सारी प्रॉब्लम्स भी आपकी हम लोग सुनेंगे और उसको सॉल्व भी करेंगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।